Disney Plus, we're able to extend this way of storytelling to a new format, creating series that are connected to our theatrical releases, making the MCU more immersive than ever. There's a lot of new content coming from Marvel Studios, so let's get started. WandaVision will be the very first Marvel Studios series on Disney Plus. Wanda and Vision are two of our most powerful and complex heroes, and this series is a perfect expansion point for MCU storytelling. Launching on Disney Plus on January 15th, in January, we'll begin filming Thor: Love and Thunder with director Taika Waititi and Chris Hemsworth, Natalie Portman, and Tessa Thompson returning. And I'm pleased to confirm that Academy Award-winning actor Christian Bale is playing the villain, Gore the God Butcher. Thor: Love and Thunder releases in theaters on May 6, 2022. Elizabeth Olsen is currently in London right now. She's shooting the film Doctor Strange in the Multiverse of Madness with director Sam Raimi, star Benedict Cumberbatch, and the rest of the cast, including Benedict Wong, Rachel McAdams, and Chiwetel Ejiofor. And joining them is a new fan favorite character from the comics, America Chavez, played by Xochitl Gomez. This film hits theaters March 25th, 2022, and we're really pushing the boundaries of storytelling with this thrilling, scary, mind-bending adventure. Not only will Doctor Strange in the Multiverse of Madness connect directly to the events of WandaVision, but it will also connect to the events of our new Spider-Man film coming to theaters December 2021. Director Peyton Reed is hard at work with our Marvel Studios team on the third Ant-Man film, which will officially be called Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, and Michelle Pfeiffer are all returning. And Catherine Newton is joining the cast and playing Cassie Lang. And in the role of Kang the Conqueror, we have a great actor, Jonathan Majors. Now to another hero we last saw in Avengers Endgame, Black Widow will return to the big screen on May 7th, 2021. Of course, the film stars Scarlett Johansson as Natasha Romanoff. Fans have been patient, and I can't tell you just how ready we are for this Avenger to finally have her own standalone film. And speaking of fan-favorite characters, Loki. The God of Mischief will step out of his brother's shadow and into his own series on Disney Plus in May of next year. The great Tom Hiddleston returns as Loki and is joined in the series by Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia DiMartino, Mumni Mosaku, and Richard E. Grant. As with our other shows coming to Disney Plus, we want to try something a little different, explore a new genre for us at Marvel Studios. So we've put Loki in the center of his own crime thriller. If that sounds a little unusual or confusing, don't worry. Loki is just as confused. Moving to our next series for Disney Plus, which launches this coming March, The Falcon and the Winter Soldier features two recognizable superheroes last seen together in the final moments of Avengers Endgame. Sam Wilson, aka the Falcon, is played by Anthony Mackie, and Bucky Barnes, the Winter Soldier, is played by Sebastian Stan. The Falcon and the Winter Soldier is a cinematic experience. It's a Marvel Studios movie played out over 6 episodes. Debuting for the first time in the MCU, She-Hulk is coming to Disney Plus. It's a series about a woman trying to navigate the world and be taken seriously as a working professional, despite the fact that she's well over 6'7" and green. It's a very funny series being directed by Kat Coiro and Anu Valia. And I can officially confirm that She-Hulk / Jennifer Walters will be played by the talented and Emmy Award-winning Tatiana Maslany. I'm also pleased to reveal that the brilliant Tim Roth is returning as the Abomination, a character we first introduced to the MCU in 2008's The Incredible Hulk. And if that's not enough, I can confirm that the Hulk himself, Mark Ruffalo, will be appearing in the series as well. And since Jennifer Walters is a lawyer who specializes specifically in superhero-oriented legal cases, you never know what Marvel characters are going to pop up from episode to episode. Original Avenger Jeremy Renner returns to star in Hawkeye, launching on Disney Plus late next year. In our series, Hawkeye teams up with another well-known archer from Marvel Comics, Kate Bishop. And I'm very pleased to confirm that Kate will be played by the amazing Haley Steinfeld. Rounding out that cast are Vera Farmiga, Fra Fee, and newcomer Alakwa Cox playing Maya Lopez. The episodes are being directed by Rhys Thomas and the directing duo of Bert and Bertie. Shifting to Marvel Studios' first animated series, coming to Disney Plus next summer, What If? Flips the script on the MCU, taking famous events from the films and reimagining them in unexpected ways.
We've assembled a stellar voice cast with many MCU stars reprising their roles. One of the best things about expanding the MCU to Disney Plus is that our team at Marvel Studios is finally able to do some of the things we've always wanted to do, but didn't quite have the right outlet for. Like produce our first ever live-action holiday special. In irreverent Guardians fashion, the Guardians of the Galaxy Holiday Special is going to be a lot of fun, especially since James Gunn is back to write and direct. In fact, we're going to shoot it during production of Guardians of the Galaxy Volume 3. This special will drop the holiday prior to the next Guardians of the Galaxy film, which hits theaters in 2023. And speaking of Guardians, aptly titled I Am Groot, everyone's favorite little tree, Baby Groot, will star in a series of shorts on Disney Plus featuring several new and unusual characters. Ironheart will be a series for Disney Plus about genius inventor Riri Williams, who has the most advanced suit of armor since Iron Man's. Dominique Thorne will play the title role. And as we like to do, both Secret Invasion and Ironheart will tie directly to MCU feature films. Secret Invasion, coming to Disney Plus. Samuel L. Jackson is back as Nick Fury, and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull, Talos. Next to Civil War, Secret Invasion is arguably the biggest crossover comic event in the last 20 years, and we're bringing it to Disney Plus. It's about a sect of Skrulls who have infiltrated every level of life on Earth. Launching on Disney Plus later next year is Miss Marvel. Miss Marvel is a Pakistani-American teen superhero. Earlier this year during shutdown, we held online auditions all around the world to find our Kamala Khan, and we found her in Iman Vellani. Iman will be surrounded by a phenomenal cast and creative team that will bring this story to life. The fact about Miss Marvel is that her idol is Captain Marvel, and Captain Marvel 2 is currently in the works with director Nia DaCosta. And today I'm excited to announce that Miss Marvel, played by Iman, will be joining Brie Larson and co-starring in Captain Marvel 2, along with a grown-up Monica Rambeau, played by Tiana Paris, whom we will have already met in the upcoming WandaVision. So by now you should start getting a sense of the interconnectedness that infuses all of our storytelling. But that doesn't mean there aren't some unexplored corners of the universe. With next year's Eternals, we're introducing a brand new ensemble of superheroes to the MCU, played by a spectacular cast. This is an epic story spanning thousands of years, and it's one of our most ambitious films yet. It's set for theatrical release on November 5th, 2021. Bringing a whole new different vibe to the MCU, Moon Knight is an action-adventure, Indiana Jones-type story coming to life as a Disney Plus series directed by Mohamed Diab. The character Moon Knight is a complex vigilante who suffers from dissociative identity disorder. And these multiple identities that live inside him are very distinct characters in the series. The backdrop of our story is incredible Egyptian iconography. Egyptology is something the world's always been fascinated by, and we're going to tap into it in a fun and bold way in Moon Knight. We've just wrapped production in Australia on our film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, and we're so impressed the way Simu Liu has brought the character of Shang-Chi to life. Simu is surrounded on screen by a fantastic cast that includes Awkwafina, Tony Leung, and Michelle Yeoh. This film is among the very first in our Phase 4 and is set to release in theaters on July 9th, 2021. We're also well underway on a series for Disney Plus based on Armor Wars, a classic Marvel story about Tony Stark's worst fear coming true. It's what happens when his tech falls into the wrong hands. And this series will star beloved member of the MCU, Don Cheadle, will be returning as Jim Rhodes, aka War Machine. As we announced at Comic-Con last year, we're moving ahead with Blade, starring Academy Award winner Mahershala Ali. The development and storylines are coming together, and we'll have announcements very, very soon. I wanted to acknowledge the devastating loss of a dear friend and member of the Marvel Studios family. Chadwick Boseman was an immensely talented actor and an inspirational individual who affected all of our lives, professionally and personally. His portrayal of T'Challa the Black Panther is iconic and transcends any iteration of the character in any other medium from Marvel's past. And it's for that reason that we will not recast the character. However, to honor the legacy that Chad helped us build through his portrayal of the King of Wakanda, we want to continue to explore the world of Wakanda and all of the rich and varied characters introduced in the first film. Writer-director Ryan Coogler is hard at work on the sequel now and will bring the film to you in theaters July 8th, 2022. And finally, I'm happy to announce a film about one of the truly iconic Marvel families. In fact, Marvel's first family, Fantastic Four. We're working on a feature now, and it will be directed by the director of our recent Spider-Man films, John Watts.
We've got a lot in store at Marvel Studios, and Disney Plus is key to the interconnection and expansion of the MCU. It will be home for both our feature films and our series for years and years to come. Since Marvel first joined Disney back in 2009, Bob Iger's been the biggest champion of the work that we do. None of this would have been possible without his support. So it is now my pleasure to turn things back over to Bob. Thank you. हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज़ के अनाउंसमेंट के बारे में जो कि केविन सर ने रिसेंटली किए हैं। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बताइए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिज्नी का इन्वेस्टर डे होने वाला है, वगैरह वगैरह चीज़, टाइमिंग बताया था। आप में से जिन लोगों ने मुझसे लिंक मंगाया था मैंने वो भी दे दिया था। फिर आप लोगों को बताइए कि इन्वेस्टर डे के शुरू होने के पहले मैंने आप लोगों को मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे बताया था कि सीक्रेट इन्वेजन ऐसा मैंने टीज़ किया था। WandaVision की सीरीज़ के बारे में टीज़ किया था और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ का तो मैंने आप लोगों को रूमर दे दिया था कि टीज़र ट्रेलर रेडी है। अब वो लोग मतलब अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे उनकी मर्ज़ी, लेकिन उन लोगों ने अपलोड किया। तो सिंपल से कहना मेरा यही था, जितने मैंने रूमर बताए थे वो कंफर्म हो गए वहाँ पे। बाकी और मैं रूमर आप लोगों को बताऊँगा और मार्वल स्टूडियोज़ ने अलग से उन लोगों की तरफ से भी एक्स्ट्रा बताया है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। और जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, लेकिन मैं आप लोगों से थैंक्स करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया और डीएम किया सुबह सुबह कि ट्रेलर आ गया है और अनाउंसमेंट के बारे में बताया। तो उन लोगों को थैंक्स। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं रात को जागा था, सबसे लास्ट मार्वल का पैनल हुआ, मैं पक गया था देखते देखते। फिर लास्ट में आखिरकार मार्वल का पैनल हुआ तो मेरे को खुशी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन मेरा मतलब जागना सफल हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। वैसे अब बात करते हैं कि केविन सर ने वहाँ पे ऑफिशियली क्या क्या बताया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ कंफर्म वाली चीज़ बताऊँगा। फिर इसके बाद मैं अलग से हर एक टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा, यानी कि जैसे कि थॉर लव एंड थंडर मूवी हो गई, कैप्टन मार्वल 2 हो गई, और भी जितनी सीरीज़ है ऐसे अलग अलग वीडियो ला के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझे और मुझे भी आप लोगों को समझाने में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि एक वीडियो में मैंने सब बताया तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओगे और थोड़ा चीज़ भूल भी जाओगे मेरे हिसाब से, और मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है ऐसा भीड़ किया तो मैंने। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि वैसे आप लोगों को सिंगल बताऊँ, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो अब बात करते हैं इवेंट के बारे में। तो मार्वल स्टूडियोज़ का इवेंट शुरू हुआ था केविन फेइगे सर से। तो केविन फेइगे सर आए स्क्रीन पे और उन्होंने कहा कि WandaVision की सीरीज़ फर्स्ट है, यानी कि मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से फर्स्ट सीरीज़ जो हमें देखने मिलेगी डिज्नी प्लस पे वो है WandaVision की सीरीज़। फिर उन्होंने WandaVision की सीरीज़ का ट्रेलर दिखाया और जैसे ही उन लोगों ने वहाँ पे ऑनलाइन ट्रेलर चलाया उतने में यूट्यूब पे भी उन लोगों ने पब्लिश कर दिया था, यानी कि सब प्लान था। फिर ट्रेलर ख़त्म होने के बाद केविन फेइगे सर ने कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी कनेक्ट होगी WandaVision की सीरीज़ से और स्पाइडरमैन 3 मूवी से। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को सिर्फ बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या बताया है। बाकी ये जो मैंने अभी कहा कि स्पाइडरमैन 3 से कनेक्ट होने वाली वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब मुझे भी पता है कि आप लोग मेरे से सुनना चाहते हैं और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मल्टीवर्स स्पाइडरमैन 3 में होगा। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया था मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ पे मैं बहुत ही एक्यूरेट बताता हूँ कि स्पाइडरमैन 3 एक मल्टीवर्स मूवी होने वाली है। मेरी पिछले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट देखा के बोला था। तो ये टॉपिक मतलब बंद करते, मैं वो सेपरेट वीडियो में क्लियर करूँगा आप लोगों को। मैं सिर्फ यहाँ पे उन्होंने जो कहा है मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। और फिर केविन फेइगे सर ने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ का ट्रेलर दिखाया और साथ ही उन्होंने ट्रेलर के बाद बताया कि वो कब स्ट्रीम होगी। और आप लोगों ने पोस्टर देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, उन लोगों ने अपलोड कर दिया था। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 मार्च 19 को द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ हमें देखने मिलेगी। ट्रेलर मुझे अमेजिंग लगा और इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद उन्होंने बताया, यानी कि केविन फेइगे सर ने बताया लोकी की सीरीज़ के बारे में। फिर लोकी की सीरीज़ के बारे में बताने के बाद उन्होंने लोकी का भी फर्स्ट लुक दिखाया, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा यूट्यूब पे। और फिर केविन फेइगे सर ने लोकी की सीरीज़ के ट्रेलर के बाद, यानी कि मैं ट्रेलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा क्लिप जो था वो लोकी का ही था, 2 मिनट 45 सेकंड्स ऐसा कुछ था कुछ। तो लोकी की सीरीज़ के बाद उन्होंने बताया व्हाट इफ सीरीज़ का फर्स्ट लुक, जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया होगा। फिर व्हाट इफ सीरीज़ के बाद उन लोगों ने दिखाया मिस मार्वल का लुक, वहाँ पे हमें ईमान विलानी दिखी, तो आप लोगों ने वो भी देख लिया होगा यूट्यूब पे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कैप्टन मार्वल 2 के बारे में। तो उन्होंने कहा कि कैप्टन मार्वल 2 में हमें दिखाई देगी मिस मार्वल और मोनिका रैम्बियो। तो उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे कंफर्म कर दी और ये तो मतलब सिंपल सी बात थी, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और फिर कैप्टन मार्वल 2 के बाद केविन फेइगे सर ने शील्ड के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि शीयल की सीरीज़ में शीयल का रोल प्ले करेगी टाटियाना मसलानी। तो आप लोगों को पता है कि उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में मना किया था। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि हॉलीवुड ट्रेड वाले अगर कुछ कहते हैं वो 95% सच होता है, तो उसे सच मान के चलो 95%। तो देखो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, हो गया ना 100%। तो शीयल की सीरीज़ में शीयल का रोल प्ले करते हुए हमें नज़र आएगी टाटियाना मसलानी। और साथ ही केविन फेइज सर ने यह भी कहा कि एबोमिनेशन और हल्क दोनों हमें दिखाई देंगे शीयल की सीरीज़ में। और शीयल सीरीज़ के बाद केविन फेइज सर ने अनाउंस किया 3 न्यू सीरीज़, यानी कि सीक्रेट इन्वेजन, आर्मर वॉर्स और आयरन हार्ट की सीरीज़। तो आप लोगों को पता है ये तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को रूमर दिया था, यानी कि सीक्रेट इन्वेजन, आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स। नेम उन लोगों ने मतलब टाइटल अलग रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि वॉर मशीन के ऊपर सीरीज़ हमें देखने मिलेगी। और इस वीडियो में मैं वापस कह दूँ आप लोगों को कि मैंने लेडी सिफ के बारे में भी सुना है, लेडी सिफ की भी सीरीज़ आ सकती है। तो वेट करो, ऑफिशियल जब कंफर्म होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और 3 सीरीज़ अनाउंस करने के बाद केविन फेइज सर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के बारे में बताया कि डिज्नी प्लस पे हमें देखने मिलेगी। तो वो क्या है हॉलीडे स्पेशल, मुझे भी मतलब ठीक से पता नहीं सीरीज़ है क्या है, लेकिन देखने मिलेगा। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा पता करके। फिर उसके बाद केविन फेइज सर ने कहा कि आई एम ग्रूट करके एक डिज्नी प्लस पे हमें सीरीज़ देखने मिलेगी, जहाँ पे ग्रूट के बारे में अच्छा खासा बताया जाएगा हमें। तो वो भी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। फिर उन्होंने बताया थॉर लैवेंडर मूवी के बारे में, तो वहाँ पे ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया कि क्रिस्टियन बेल विलन का रोल प्ले करने वाले हैं और थॉर लैवेंडर मूवी का विलन होने वाला है गॉर द गॉड बुचर। तो आप लोगों को पता है मैंने थियरी वगैरह बनाया, जाके देख लो। और थॉर लैवेंडर मूवी के अनाउंसमेंट के बाद केविन फेइज सर ने कहा कि एंटमैन 3 को ऑफिशियली कहा जाएगा एंटमैन एंड दी वेब्स क्वांटमेनिया। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया होगा, तो ये कहा जाएगा। और जैसे एंटमैन 3 के बारे में बताया उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया कि केसी लैंग का रोल कौन प्ले करेगी। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे कंफर्म कर दिया कि कैंग हमें दिखाई देगा एंटमैन 3 मूवी में। तो ये लो ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है वो भी। और फिर उन्होंने कहा ब्लैक पैंथर 2 मूवी के बारे में, तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि ब्लैक पैंथर 2 मूवी में टीचाला यानी कि ब्लैक पैंथर को रिकास्ट नहीं करेंगे वो लोग, वकांडा को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे मतलब स्टोरी उन लोगों को कहाँ लेके जानी है। और इसी के बाद जाते जाते केविन फेइज सर ने कहा फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो केविन फेइज सर ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि फैंटास्टिक 4 मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर डेवलपमेंट में है और फैंटास्टिक 4 मूवी को डायरेक्ट करेंगे जॉन वॉट्स, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और अभी स्पाइडरमैन 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं, वही डायरेक्ट करेंगे फैंटास्टिक 4 की मूवी को। और कब तक हमें देखने मिलेगी फैंटास्टिक 4 मूवी, वो मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को मैंने यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों ने मतलब नोटिस किया होगा मैंने कास्ट के बारे में नेम नहीं लिया है, यानी कि कौन सी कास्ट कंफर्म है, कौन कौन न्यू आया है मार्वल स्टूडियोज़ के अंडर, वो नहीं बताया। वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊँगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद रहे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और भी वीडियोस आएगी, वांडाविजन की सीरीज़ पे भी आएगी, बाकी सीरीज़ पे भी आएगी, लोकी, फैल्कन की सीरीज़ सब पे आएगी, वेट करो। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई नहीं बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।